Assalamu alaikum. How are you all? Hope you are all doing well. Today we will read our ORC, Oxford Reading Circle. So open your first chapter. The chapter is The Bank River. Before starting this interesting story, you will have to understand the main purpose of the reading. This ORC is especially to improve your reading skills. There will be no difficult words, meanings, or exercise usually at the end of the chapter. The thing you have to focus is to read it properly. As you all know that in this term you will have inshallah English reading paper and these chapter will be evaluated. So let's start. अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं. समझ तो आप सबको आ गई होगी कि हमने सिर्फ इसकी रीडिंग करनी है और जो डिफ़िकल्ट हमारे पास जो वर्ड्स हैं हमने वो देखना है हाउ टू प्रोनाउंस दैम. और जो मेन इसके अंदर जो स्टोरी के अंदर जो भी हैपनिंग हो रही होगी आई विल टेल यू फर्दर. ओके. The river bank. The mole had been working very hard all the morning, spring cleaning his little home. First with the broom, then with the duster, then on ladder and steps and chairs with a brush and pail of whitewash, till he had dust in the throat and eyes and splashes of whitewash all over his black fur, and an aching back and wearing arms. Spring was moving in the air above and all in the earth below and around him, penetrating even his dark and lowly little house. Okay. इसके अंदर क्या है, इसकी जो स्टोरी का जो फर्स्ट पेज अभी हमने रीड आउट किया है इसके अंदर एक मोल की स्टोरी है जो कि अपने घर की सफाई कर रहा है. और वो सफाई क्यों कर रहा है? क्योंकि स्प्रिंग आ चुकी हुई है. आपको पता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे हाइड देमसेल्व्स अंडर द अर्थ. और सर्दियों की वजह से आने की वजह से वो अपने आप को अंदर बंद कर लेते हैं और वो ज़मीन के नीचे ही रहते हैं. तो मोल जो है उनमें से एक एनिमल है जो अपने आप को ज़मीन के नीचे छुपा लेता है और जब सर्दी आती है तो वो उस ज़मीन के नीचे ही रहता है और जब स्प्रिंग आती है या गर्मी आती है तो वो फिर वहाँ से बाहर आ जाते हैं. अब चूँकि ये एक स्टोरी है तो इन्होंने बताया है कि एक मोल है, उसका घर है और उस घर के अंदर वो सारी सफाई सुथराई कर रहा है. और सफाई सुथराई वो इस तरह कर रहा है कि कभी ब्रश से कर रहा है, कभी चेयर के ऊपर कर रहा है और जो वाइट वॉश कर रहा है घर के अंदर तो उसके जितने भी ज़रात हैं या जितने भी वो उसके जो पेंट है वो उसके ब्लैक फर के ऊपर गिर रहा है. और इवन ये कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम है जो कि वो कर रहा है. और जो स्प्रिंग की जो खुशबू है, जो फ्लावर की जो खुशबू है वो ऑल अराउंड उसके घर के इर्द गिर्द आ रही है और वो बहुत उससे महसूस हो रहा है. इवन दो कि वो बहुत ज़्यादा थक चुका हुआ है लेकिन फिर भी स्प्रिंग की खुशी जो है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है. आगे बढ़ते हैं. He suddenly flung down his brush on the floor, said, "Bother, oh, bother and oh below," and also hang spring cleaning, and bolted out of the house without even waiting to put on his coat. अब क्या हुआ कि अब जब उसको वो खुशबू आ रही थी और हर चीज़ को इतनी फैसिनेट कर रही थी तो वो एकदम से थक गया, वो बोर हो गया. उसने अपना जो ब्रश था उसको फेंक दिया और उसके बाद उसने कहा कि अब मुझे जो है वो स्प्रिंग क्लीनिनेस से ज़रा थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और ये बहुत ब्रेथ टेकिंग काम है, बहुत ज़्यादा जान जोखों का काम है सफाई करना. तो मुझे इस पे थोड़ा सा वो रेस्ट लेना चाहिए. और इस रेस्ट की वजह से वो इतना उकता चुका हुआ था इससे कि वो फ़ौरन से घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था. और इस तरह से निकला कि उसने कोट भी पहनने की जहमत नहीं की, बस वो उसने कहा कि बस भागो भागो भागो. Some things up above was calling him and he made for the steep little tunnel. उसको लग रहा था कि उसको कोई ऊपर आवाज़ें दे रहा है कि तुम बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ. इसी से उसने जो अपनी एक टनल बनाई हुई थी उसके अंदर से उसने बाहर निकलने की कोशिश की. अभी यहाँ तक और आगे फिर हम अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर फिर इंशाल्लाह हम पेज नंबर 10 और 11 को कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.